So this is where we left last time. We were doing forward kinematics. And in forward kinematics, the most important was that how to assign frames to a mobile, a fixed industrial robot. Okay, so we did this example in quite detail, and we went through the steps that one has to follow in assigning frames to uh, an industrial robot. And the end product of this procedure is this DH table. It summarizes the DH parameters for all the links and joints uh, of the robot. And this is where we will this is what we will take to the next step. The next step is to find the homogeneous transformation matrices for each pair of frames. So for example, we are interested in a transformation matrix that gives us the relative orientation and position of frame 1 relative to frame 2. So we'll call that transformation matrix as our T10. So we write it as T transformation of frame 1 relative to frame 0. So that we can compute from these 4 parameters from the first row of the DH table. I'll show you how. And then we're also interested in another transformation matrix, which gives us the relative orientation and transformation of the second frame relative to the previous frame. So that sort of the relative to the, so the second frame is this. We are interested in relative transformation of this frame relative to the previous frame. And if you go on, then we need another one which relates these two frames, frame number 3 and frame number 2. And we can have another frame between frame 4 and frame 3. So that obviously will not have the translation part because they're coincident. But it will have some rotation because I see some change in orientation. The z-axis and the x-axis and the y-axis, they do not match. So there will be a rotation matrix involved, and then that rotation matrix is a function of theta. So by every time we change theta, the values in this transformation matrix will change. So they are the function of the joint variables. That's why we call them variables. The rest of the parameters are constant for this particular arm. And then we can have another frame which gives us, which relates frame 5 relative to frame 4. So we can write it like this, or maybe like this. So that gives us the relative orientation of 5 relative to 4. Now, once we find these matrices, then you can be asked to find the relative orientation of, let's say, frame 4 or frame 3 relative to the base frame. Earlier, we found that the relative orientation and position of frame 3 relative to the previous frame. So that's why you saw these two up here. But how can I find, if someone asks me to find the orientation of the third frame in base frame? So anyone, how can I find this? Now that I know all others, how to find this one? And not only base frame, I might be asked to go a step further. I mean, find it located relative to the first frame. So how can I find that? So repeat the questions. Frame 3 is here. And we know that it has a certain orientation. But orientation, for this particular orientation, X is pointing to the right and Z is pointing into the page and Y is pointing downward. Okay, so how is that related to, like, for example, if I want to write the values in this,
visually, I could write it as like this. It's a 4x4 matrix, so I bring in 3x3 here, and I bring in a 3 by. Okay, they've made it out of proportion, so oh yeah, it's not like that. This one has to be 2. This one has to be 2 also. This one has to be 3, and this one has to be 3x3. And this one has to be this. Okay, so now if I find it visually, normally we do not find it visually, but it's okay as a quick check. So frame 3 relative to frame 2, it's translated along its x. So translated along x means A3 units translated along x2. Okay, and then its origin translated along y, no. Translated along z, no. And this is always 1. This is always 0, 0, and 0. And now, how about this one? Can anyone tell me what is the orientation, the rotation matrix? Sir, Z. Rotation around Z. What are the values for this particular pose of the arm? What's the Cos theta orientation of minus frame sin. 3 relative to frame 2? How are the axes of the frame 3 oriented relative to the axis of frame 2? Are they aligned or they are rotating? Sir, no rotation is there. सर x पे तो रोटेशन नहीं है 0. Can anyone hear me? Yes, sir. Hello? Hello. सर आपको आवाज Yes, नहीं आ रही sir. हमारी सर? हाँ सॉरी, Hello, sir. अब आ रही, वो म्यूट था, सॉरी. अच्छा, तो what will be the rotation matrix here? I mean, No rotation, sir. no Yes. rotation. So Sir, no rotation. how can I write no rotation here? Identity matrix, sir. Yes, very good. So this is identity matrix. So I'll just put this. But the moment theta changes, then z will still be aligned, but x and y will not be aligned. So that means that we have to write these values as a function of theta. Right now we just froze theta. We have frozen theta. Theta at this case is 0 because x's are aligned. Okay, but theta will not always be 0, but we'll address that problem later, how to find T32 as a function of theta. We're coming towards that, but right now my focus is something else. I give you the frame 3. This is pose and this is both. What does this represent? This is both position and orientation of frame 3 with respect to frame 2. This is how I would interpret this 4x4 matrix. But that's not all I need. Why I have to just locate this relative to frame 2? I do it because that's easy, because they're adjacent, they're quite next to each other. But that's not the end product that I need. However, I'm told that find the orientation of the frame 3 relative to frame 0. Then this is different. Of course, this is different than this one. So I cannot go there directly. What I'll do is I'll find the previous one. I'll go in steps. I'll find the, now that I know how frame 3 has been oriented and positioned relative to frame 2, I need a similar matrix for the
frame 2 relative to frame 1, because that's how I'll go to the global frame, because this is where we represent all the motion. This is a static frame, it doesn't move. So our we are more interested in this, but we cannot take his orientation and position directly with respect to the base. I have to go, because there are two other frames involved. So I have to go in step. I'll represent this relative to the previous, then that one relative to its previous, and then that one relative to the base frame. And that's how. What I mean to say is, for this, in order to find T3 relative to the base frame, I'll have to find T3 relative to 2, and then I have to post multiply 2 relative to 1. Post multiply because we are moving about current axis. We're not moving about global axis. Frame 3 is moving about the frame 2. That's a current axis. Okay, and then T1 relative to frame 0. This is how I have to multiply these three matrices. So right now I only know one, but if I'm asked to find the 2 relative to 1, then I can. The 2 relative to 1 is, I think, almost the same. So it's except that instead of A3, it's A2. No translation along Y of the origin of the frame 2. No translation along Z of the origin of frame 2. So these two elements are 0. And then orientation is also the same. They are perfectly aligned. So the rotation matrix is once again identity matrix. It's okay. And then I need to find the final one, which gives me the relative orientation of one relative to the global frame, the base frame. And then how can I find that? I can clearly see that the origin of frame 1 is translated by D1 along Z0. So now this time there is no translation involved along x-axis. So I'll just put in 0 there. And I'll put D1 here. And how about the orientation? Is there any change in orientation? Yes, sir. Analog X. Yes, sir. Yeah, because alpha is not 0 now. Okay, and the other one alpha was 0, so there was no change in orientation. There was no twist. But right now there is twist. So it would have been better if I had some formula and I would plug in alpha there, but it's okay, we can visually find it. So I'll just quickly do it. X1 of frame 1 is along X1 of the 0 frame. So this unit vector will remain as it is, 1, 0, 0, because it's a standard unit vector of X. As X hasn't changed, so I'll just put the standard unit vector of X everywhere. Similarly, if you look at the Y of 1 is along minus Z. So I'll put this, Y of 1 is along minus Z. So I'll put the unit vector of minus Z, which is 0, 0, minus 1. And then the Z of that is along the Y of that. So that means the Z is along the Y. So this is the standard vector, standard unit vector of Y. So now, right now I'm finding everything visually, but don't worry, because we're going towards more formula where we'll plug in things and find this. But now I can clearly find T3 0 with respect to 0 by just multiplying these matrices. So if I take this matrix there, and we can give it a try to find this big matrix. It's not big, it's also 4 by 4, but it's composite. It's coming from the product of 3 people, 3 matrices, sorry. So let's find this. What will be the position of the origin of frame 3 relative to the base frame? So of course it's 2 steps translated along x-axis. So we're gonna get A2 plus A3. A2. We'll verify this later. We are doing visually now,
but we'll verify this later. Apparently looks good because if you look at the origin of frame 2, the frame 3, it's xk long इसने a2 plus a3 travel किया है. And if you look at the origin, y के along इसने कुछ भी travel नहीं किया और global z के along इसने d1 units ऊपर गया हुआ है. So that looks right. And orientation अगर आप देखते हैं तो even if I multiply these three matrices, look, then this is identity, the orientation part. This is identity, the orientation part. So ultimately it's going to be the same as this one. But let's verify this. The x3 of that is along x naught. So this unit vector is perfect, the first one. The y3 along the negative z. So this one also looks perfect. And the z3 is pointed along y, positive. So this is perfect. So now I know a transformation matrix that, well, everywhere I have to mention that this is when theta is 0. Theta 3 is 0. And this is when theta 2 is 0. I have to exclusively mention that, otherwise this wouldn't be constant. And this is when theta 1 is 0. In other words, this T3 is when theta 1, comma 2, comma 3, they're all 0. We don't normally write it like this, but I'm just making it, highlighting this fact that, remember this, we are in a certain pose of the arm where the arm is not moving, it's statically frozen in one pose. That's why I could easily find these visually. But they may not be always easy to find visually. So we need something where we plug in these numbers and we just get these matrices. These matrices in some books are called A. So this would be called A1, A2, A3. Okay. So the general format of that is this one. This you can't remember. It's coming from these four, because remember, in the DH parameters, we either move along Z, we either move along X. That's what the DH convention. We never move along Y. If you look at the arm here, we have never moved along Y. Look, this is Y into the page. We moved along Z naught up. This is Y is downward. No, we moved along X1 to go to the end effector. There Y2 is downward. No, we prefer to move along X2. That was the convention says. And here X3. So even so, if you go from the best to the tool, you either move along Z or move along X. So that's, and then you either rotate about Z or rotate about X. That rotation about X is alpha. See, this was minus pi by 2. Yeah, this was minus pi by 2 because I rotated minus pi by 2 about alpha. That's why Z naught was upward, but now it's into the page. There's a twist. Okay, so, and what I mean to say is this is the general format. So if I bring now this general format of this, if I can copy it, no, I cannot. So let's copy it this way. So if I take it now and I go back to where I computed those matrices visually,
Okay, so let's make a duplicate of this, and we don't need this one. We don't, let's say we don't need this. We don't need this. What we want to verify is how this came out. So bring in this guy. And in this substitute third row, because this is T3 relative to 2. So the third, just substitute the third row in this. Okay. So now how to substitute? It's easy. T3 is variable, theta 3, but I told you theta 3 is 0. So let's put theta 3 0 everywhere. Okay. And then alpha is also 0 for this particular row. So alpha, C alpha mean cos of alpha. Remember, I don't know if you remember this or not, but let me write it down. This is a short way of writing cos theta, cos of theta, just to save some space. And this is a short way of writing sine of theta. So if you see subscript alpha, then that means this is just cos of alpha. That's all. Okay, and so on. So now if you start substituting this, so cos of 0 is what? The first element. What is the cos of 0? Because theta is 0, I told you theta. Or maybe let's leave the theta 3 as variable, the rest of them are constant. So let's just quickly do it. Constant kar do. Yeah, let's do it. Okay, so नीचे रख देते हैं. Okay, so I bring in this guy, Control C, Control V, and then imagine if theta 3 is not 0. So I'll say that theta 3 as a function of T3, I mean this matrix, as a function of theta will be C theta 3. C theta 3. And here, what is cos alpha? Alpha is 0. So what is cos of 0? What is cos of 0? Hello? 1. 1, sir. Cos of 0 is 1. 1. So this one, this sine of theta 3 माइनस लगाएंगे क्योंकि वो दूसरा तो 1 हो गया ना, cos of this. मैं एरो दे देता हूँ इधर ताकि ये मैं यहाँ से निकाल दूँ substitution के बाद, after substitution. अच्छा, how about the third one? Sine of alpha, alpha is 0. What is sine of 0? 0. 0. sir. So ये part तो 0 हो गया. Good. अब ये sine of theta तो ये वाला भी sine of theta है, theta 3. इधर cos of alpha है, तो cos of alpha it's okay, it's 1. So I'll just put, मैं सिर्फ थीटा को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि थीटा मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल छोड़ना चाहता हूँ, बाकी तो d भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, d3 भी कांस्टेंट है, अल्फा 3 भी, a3 भी कांस्टेंट है, अल्फा 3 भी कांस्टेंट है. तो मैं वो सब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ सारे और सिर्फ थीटा छोड़ रहा हूँ. अगरचे थीटा भी अभी मैं अपनी मर्जी की कोई वैल्यू डाल दूंगा, थीटा 3 is equal to 0, बट फिलहाल नहीं डालते. लेट्स मेक अ जनरल फॉर्म which holds true for any value of theta. Okay. How about this one? A3, remember I इस केस में 3 है. So I, ये जो I आपको नजर नहीं आ रहा,
ये 3 है और ये I3 कहाँ से आया? It is coming from the fact that we are in a third row. This one. It's a third row of the DH table. इस तरह बाकी रोज के लिए भी करेंगे। ये तो मैंने बस सिर्फ एक डायरेक्ट भी केस उठाया और उसको मैं शुरू हो गए, बट we are focusing on third row at a time right now, which will give us the position and orientation of third frame relative to the previous, the second frame. Okay, now let's move on. So now, sorry about that. Yes, ये वाला part 0 है, ये sin of alpha 0 है, cos of alpha 1 है, it's okay. D3 0 है, ये हमसे रह गया. A3 sin of theta 3. या तो इसका मतलब है इसके साथ भी आना चाहिए था A3 cos of theta 3. और ये आएगा A3 sin of theta 3. अब जनाब आपके पास जनरल मैट्रिक्स है, अगर D3 0 है तो द रेस्ट इज जस्ट फिलिंग इन. लाइन करे या ना करे डजंट मेक बिग डिफरेंस, करें तो अच्छा लगता है. दिस हाँ जी. अब बताएं, अब अगर मैं इसमें एक स्टेप फर्दर चला जाऊं और थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट कर लूं, तो व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो ये कब? ये तब जब मैं थीटा को थीटा 3 को आई मीन जीरो, ये एक एग्जांपल वैल्यू है. आई कैन प्लग इन एनी थीटा, आई कैन प्लग इन एनी थीटा. तो ये मेरे पास आ जाएगा this. So now you see the steps are: bring in the generic form of the homogeneous transformation matrix that gives you transformation of the any frame relative to the previous frame या any two frames, और उसमें values plug in करते जाएं तो आपको आखिर में वो T3 मिलेगा. Now I don't have to tell you how would you get T2. For T2 you will take this guy and evaluate is for row number 2. जब रो नंबर 2 में करेंगे तो you will get this. सॉरी, ये तो हाँ थीटा 2 इज इक्वल टू 0 के लिए है ना. तो फिलहाल थीटा 2 0 करने से पहले एक स्टेप है कि थीटा 2 के फॉर्म में निकाल दें, फिर बेशक थीटा 2 0 कर. ठीक है, लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि ये कैसे आता है. ये आता है जब आप थीटा 3 थीटा 2 सॉरी थीटा 2 is equal to 0, D2 is equal to 0, alpha A2 is equal to 0.1778 और alpha 2 is equal to 0. जब ये सारे वैल्यूज आप प्लग करेंगे तो क्या होगा? Then you get that.
अब जनाब आपके पास ये मैट्रिक्स किया। तो generically, if I can summarize what I'm doing, you will find, wait, okay. Mhm. You will find these matrices as like this. So इसको मैं यहाँ पे A1 कह रहा हूँ, लेकिन अच्छा ये तो ये आम नहीं है, दूसरे आम के लिए जिसके लिए हमने किया है मैंने ये, let me pull out the other lecture. These are the A matrices. अच्छा मैं सिर्फ ये करेक्शन कर दूं कि नोट A1 is same as T1 relative to frame 0. कुछ किताबें ऐसे करते हैं। तो A2 is T2 previous to 1 and so on. ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है, this is T1 frame 0 with respect to frame 0, T1 with respect to frame 0, ये वाला, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये अभी हमने उधर फाइंड किया है, लेट्स मैच इट। ये we did this was T3 and 0 here. So if you match this, इसको मैं उधर ले जाता हूँ because we did this in detail. If I can paste it here, so it's the same. C, अच्छा नहीं सॉरी, ये नहीं किया हमने, ये T3 किया ना, A3 जो है ना वो T3 relative to frame 0। एक ए में ऊपर वाला सब्सक्रिप्ट इसलिए नहीं रखते कि ए इज फॉर श्योर दैट ऊपर वाला सब्सक्रिप्ट इज जस्ट प्रीवियस टू दिस। तो अगर ये 3 है तो सब्सक्रिप्ट ऊपर 2 है, अगर ये 2 है तो सब्सक्रिप्ट ऊपर 1 है, अगर ये 1 है तो सब्सक्रिप्ट ऊपर 0 है। तो नहीं लिखते, लेकिन अगर आप लिखें तो आपको हेल्प होगी। टी की सूरत में हम मस्ट लिखते हैं, ए की सूरत में ऑप्शनल है, दैट्स व्हाई मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ। तो T3 हमने वहां से वेरीफाई किया, वी एक्चुअली फाउंड this on the previous slide. Yeah, we found this on the previous slide. You don't even have to write this now. कि भाई ये हमारा T3 है, we know that it's a function of theta 3. अच्छा इन्होंने फिर और भी आसान किया, थीटा भी नहीं लिख रहे, बस C3 मीन cos of theta 3. It's okay. और भी आसान हो जाएगा लिखना, ठीक है। C3 मीन cos of theta 3 minus S3 mean minus sine of theta 3, क्योंकि हमें पता है कि the only variable is theta, so why to write theta everywhere? Why don't just write S3? S3 means sine of theta 3. Sine of theta 3. सर ये जी जी सर ये अगर T3 विद रिस्पेक्ट टू 0 अगर हम लिखेंगे तो सर अगर उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट जो है वो A यूज करें, स्क्रिप्ट नहीं जो नहीं, है वो उसके लिए A3 ये यूज करें, तो नहीं, फिर सर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ए नहीं हो जाएगा? ए उसके लिए नहीं यूज कर सकते। A is only with respect to the previous frame, that's why I hate A ना। ये सिर्फ इस वक्त जो ये किताब मैं यूज कर रहा हूँ ना, आप A यूज करे भी ना, मैं असल में इसको शायद चेंज ना कर सकूं। लेट मी ट्राई, oh yeah I can change, why don't I just write T1 with respect to 0, T2 with respect to 1, and T3 with respect to 2. Let's see if it can. Temporary folder cannot be written, so let me try it in folder E.
चलो ये 20 सेकंड कोई मसला है, लेट्स डू दिस। अच्छा मुझे नहीं करने दे रहा, बहरहाल मैं इसको डिलीट ही क्यों ना कर दूं। I can clearly write, I can easily write this, ये A को हटा ही दें बस। How to save time, there's no way to save time। तो इसको मैं क्रॉप करता हूँ, I just get rid of। हाँ जी, so what I do is I can write it as like this, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। It is T1 relative to 0, T2 relative to 1, T3 relative to 2। और इधर अगर आप गौर से देखें तो it is actually T3 relative to 0। तो यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश टाइप अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, नाम इसलिए दिया कि फ्रेम नंबर 3 इज योर रेस्ट फ्रेम। ठीक है, तो ये भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 नोट फ्रेम 3 इज रेस्ट फ्रेम, या इस फ्रेम असाइन टू रेस्ट, फ्रेम असाइन टू रेस्ट जॉइंट। तो नाम 3 की जगह रेस्ट याद रखना आसान है, और लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा जॉइंट्स के नाम हो ना। ये तो इस केस में है क्योंकि उसकी वो बहुत हद तक रिजेंबल करता है हमारे हाथ के साथ, ह्यूमन हाथ। और बेस 0 is the base frame, so that's why I can write that this transformation matrix give me the relative position and orientation as a function of theta, and not only theta, theta 2, theta 3, and theta 4. Because if I write it more formally, T3 is a function of theta 3. Okay. This is a function of theta 2. This is a function of theta 1. So when you multiply them, automatically this guy is a function of all the theta. It's theta 1 comma theta 2 comma theta 3. So you can see theta 1, theta 2, theta 3 everywhere, see? So if you do this lengthy multiplication, well, which I prefer to do in steps, I first multiply the first two, as long as I don't change the sequence. First multiply by second is giving me this. You know how to do matrix multiplication. And then I leave this third one as it is. I leave it. And then I do these, I multiply these two, so I get this. So now T30 as a function of all the joint variable look like this. So the only 1, 2, 3 subscripts that you see, they actually mean theta 1, theta 2, theta 3. अच्छा एक चीज का ख्याल रखें, थोड़ी सी इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन की है, उसके बगैर ये आंसर और भी लेंथी दिखता, और वो मैं आपको बताता हूँ सिंप्लीफिकेशन क्या है। C of 1 multiplied by C23 is actually cos of theta 1 multiplied by cos of theta 2 plus theta 3. तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें, अक्सर लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि C of 2 and 3 is not cos of theta 2 and theta 3. इसकी तुक नहीं बनती, ठीक है? It is actually the sum of these two. ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें कि ये अब आपको थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए, अगरचे एग्जाम में I wouldn't expect too much,
ठीक है, लेकिन बहरहाल ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मैंने इसमें की है। अगर आप ये आंसर वेरीफाई करना चाहें ना कि भाई ये आता भी है कि नहीं आता, तो ये आता है अगर अल्टीमेटली आप इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। cos of theta 1 multiplied by cos of theta 2 multiplied by cos of theta 3 is minus c1 s2 s3 is actually c1 c2 3। उसकी वजह यह कि मैंने c1 को कॉमन लिया, अंदर रह गया c2 c3 प्लस s2 s3। और इसको क्या कहते हैं जी, हैव यू सीन, इसको नोट 1 कह लें और ये नोट 2 कह लें। तो फ्रॉम योर FEC यू मस्ट नो दैट, यू शुड नो दैट, इसको मुझे लगता है डबल एंगल आइडेंटिटी कहते हैं कि क्या, आई कंफर्म। दिस इज इक्वल टू cos of theta 2 multiplied by cos of theta 3 minus sin of theta 2 multiplied by sin of theta। In other words, जनरली हम लिखते थे कि भाई cos of x plus y, let's say cos of x plus y was cos of cos x cos y minus sin of x sin of y। ये आपको याद होना चाहिए अपने पीसी से। हाउ अबाउट साइन, ये x और y जरा ज्यादा मजे का नहीं आया, देयर शुड बी सम गैप। ठीक, हाउ अबाउट साइन, एनीवन? हाउ इज साइन ऑफ अ सम? अगर इधर साइन हो तो अब इधर क्या हो? sin x या साइन x cos y cos y plus प्लस, गुड, जिधर cos x साइन sin था y। अब उधर cos कर लें, तो दिस विल बी cos x sin y। तो बस ये आपको आना चाहिए। बाकी if you know this then there isn't any more trigonometry needed than this। This is all we need। लेकिन ये तो सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई किया ना, और बाकी 2 कहाँ गए? रोज तो 5 है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो 5 है, ये तो सिर्फ 3 जॉइंट वेरिएबल्स आ गए। तो लेट्स कंटिन्यू, we'll find another transformation matrix which gives us, इसको भी मैं करेक्ट कर लूं, ये इसको क्रॉप कर लें like this, and we know that this is equal to t of 4 relative to 3 and t of 5 relative to 4। Yeah, and we know that fourth joint, the variable is theta 4, and we know that for the fifth joint the variable is theta 5, it's a function of theta 5। So now if you repeat the same process, which process? You bring in the general form, which one? This one। इसमें भी ये a को मैं हटा देता हूँ, it's not ai relative to the previous frame, it's ti relative to ti minus 1। Oops। ठीक है, तो ये इसका जेनेरिक फार्मूला आपको बता दिया। अब आप क्विक चेक के तौर पे लेट्स से T4, क्या ये अभी भी ये A हर जगह है, ये आपको तंग करेगा। लेट्स कॉपी दिस, let's crop this, get rid of that guy, just plug it in here। So now if you look at this, someone tells you what's the value, ये कैसे आया? Let's say T4 relative, T5 relative to T4 कैसे आया? तो T5 relative to frame 4, sorry, let me say it properly, transformation of frame 5 relative to frame 4 कैसे आया? वो
इस जेनेरिक मैट्रिक्स में हमने फिफ्थ रो से वैल्यूज प्लग इन की, फिफ्थ रो ऑफ द डीएच टेबल। सो थीटा 5 तो वेरिएबल है, तो थीटा आई की जगह थीटा 5 लिख दूंगा, तो ये इट विल बिकम C5। C5 मीन कॉज ऑफ थीटा 5। सिमिलरली पाई को अल्फा को अगर आप देखें तो वो 0 है, तो जहां जहां आपको अल्फा नजर आ रहा है देखें साइन ऑफ अल्फा इज 0, तो ये जो एलिमेंट है वो आपको यहाँ 0 नजर आ रहा है। कॉज ऑफ अल्फा इज 1, कॉज ऑफ 0 इज 1, तो आपको ये 1 नजर आ रहा है। ठीक है, और ये A5 जो है वो 0 है, तो ये वाला ये 0 आएगा ऑटोमेटिकली। और A5 इधर भी है IS5, तो A5 0 है, तो ये भी 0 आ जाएगा। एंड डी आई की जगह D5 लगा लेंगे, बिकॉज D5 बल्कि D5 की 0 नहीं है, D5 1.1295 है, तो that's it. And then you multiply these two, so you get this. And now you have gone in steps. You first located wrist with respect to the base, first 3 joints, and then tool with respect to the wrist. So ultimately, if you multiply all these 5, T1, T2, T3, T4, and T5, so you're gonna get this. And even if I don't write those, which one is a function of which theta, you already know that the variable here is, मैं लिख भी सकता हूँ कि it's theta 1, control C, it's theta 2, it's theta 3, it's theta 4, and this one is theta 5. All other parameters, DH parameters plugged in. तो आखिर में जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आते हैं, which gives you, मैं लिख लेता हूँ, this transformation matrix gives the position and orientation of tool frame with respect to the base frame as a function of joint variables. So this is as a function of all joint variables. And we know that for this particular arm, the joint variables are all thetas. There's no linear joint. We all have prismatic joints. Okay, so every time the theta changes, you just plug in these values and you're gonna get, for example, इसमें वैल्यू थीटास की पुट करते हैं, तो थीटा में आपको देता हूँ होम पोजीशन, लेट्स से दिस इज होम पोजीशन। होम पोजीशन में थीटा 1 is 0, थीटा 2 is 0, थीटा 3 is 0, थीटा 4 is -π/2 and थीटा 5 is 0। अब इसमें प्लग इन करें, जहां जहां भी आपको थीटा 1 नजर आता है, cos of थीटा 1 is 1, cos of theta 2 plus theta 3 plus theta 4, theta 2 plus theta 3 plus theta 4, तो मुझे लगता है वो 0 आएगा, क्योंकि 0 plus 0 plus -π/2 is -π/2 and cos of -π/2 is 0, so ये वाला पार्ट 0 आता है, प्लस ये। तो इफ यू डू दैट, चाहिए हुआ क्यों नहीं, होना चाहिए था, मैं कर लेता हूँ क्विकली, इतना टाइम नहीं लगेगा। So let's bring in our transformation matrix. मैं बस गलत ना हो जाऊं, you have to keep an eye. अच्छा, इधर भी A को A ना कहें, अच्छा बस A भी कहें T भी कहें, तो आप समझदार हैं कि भाई this mean transformation matrix of the I frame relative to the previous frame. और उसको हम इन्वर्स भी कर सकते हैं, इन्वर्स आगे हमें काम आएगा।
So considered from week 5, no, not lecture 5, week 5 and 6. ठीक है, so मैं ये quickly कर देता हूँ कि I just bring in a 4x4 matrix from where? From here, let's say दूसरी lecture में मैंने type किया है somewhere. Yeah, let's take this one. Yeah, yes, on it. Control C. And now I have थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. What I'm trying to find is I'm finding tool to the base. So tool is 5th prime, base is 0. So you know what I'm doing. And I just need to plug in the values of the thetas. So let's do थोड़ा lengthy होगा, but it's easy. Yeah. So थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं. Yeah. So now cos of theta 1, I know theta 1 is 0, so this will be 1. This will be 0, so this part is 0. Sine of theta 1, sine of theta 1 is 0, so this part is 0. Either plug in करें second element में C1, C2, C3, C2, C3, C4. तो जैसे ही cos of pi by 2 आया वो वैल्यू 0 हो गई, अपने साथ बाकियों को भी 0. Sine of theta 1 is 0, so this value is also 0. ठीक है, जो हम करते हैं उसको हम रेड करेंगे ताकि हमें पता हो. So now let's do this one. बल्कि जो नहीं करते उनको रेड करेंगे. Wherever we correct, let's make it that. Now let's do the third one. Third one किधर गया? Yeah, ये minus C1. So C1, C of 0, cos of 0 is 1. S of 2 plus 3 plus 4. Yeah. So anyone, what will be this value? Sine of theta 2 is 0. Sine of theta 3 is also 0. नहीं होगा सर. Sine of minus pi by 2, which will be minus 1. Minus 1 into minus, this will be plus 1. समझ नहीं आ रही? हेलो? आ रही है सर. हाँ सर जी. ये cos और sin आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे सर. हो रहे हैं ना, तो वो तो cos of theta 1 1 बन गया ना. Cos Yes, of sir. theta 1 1 बन तो गया ये तो sin of 2 3 sin हाँ of 2 3 4 सर ये आपस में ऐड हो रहे हैं. वो थीटास पहले ऐड करें फिर उनका साइन लें. तो थीटा ऐड कर लेना. 0 ठीक प्लस है सर. 0 प्लस माइनस पाई बाई 2 इज माइनस पाई बाई 2. ये मैं एक कर लेता हूँ, ये मुझे सर पता ठीक है कुछ सही. लोगों को समझ नहीं आ रही. लेट्स डू इट. दिस इज cos of 0 multiplied अच्छा शुरू में माइनस भी multiplied by sine of theta 2. Theta 2 is 0 plus theta 3 is 0 plus minus pi by 2, which is minus. Cos of 0 is 1 and sine of minus pi by 2 is minus 1, which comes out as 1. So ये इस तरह आता है, and this gives me this 1. ठीक है, ये इसको ऐसे कर रहे हैं. तो ये तो सिर्फ एक वैल्यू मैं आपको एग्जांपल के तौर पे डिराइव कर रहा हूँ, बट आई कैन नॉट डू दिस फॉर ऑल वैल्यूज. सो लेट्स डू इट विजुअली. यू आर 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स. इसमें देखें C2 0 है तो ये अच्छा ये कहीं नहीं जाएगा. C2 cos of theta 2 is 1, तो ये वैल्यू रहेगी. ये वैल्यू 2 और 3 भी 0 है, ये भी रहेगी. 2 और 3 भी 0 है. और ये 2 प्लस 3 प्लस 4 हमारे पास इधर वैल्यू आई है कि ये -1 है. तो -1 ये इसको +1 बना देगा. 2 + 3 + 4 2 + 3 + 4 और cos of theta 1 से 1 आएगा. तो ये तो या
कुछ करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। सो ये आएगा 117.8 प्लस 117, फिर कैलकुलेटर से करके इधर वैल्यू क्यों ना डायरेक्ट एंटर कर दूं, इट्स 117.8 टाइम्स 2 माइनस आएगा प्लस आएगा क्योंकि वो इसके साथ अपना माइनस है, प्लस सर आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 177.8 है सर। नहीं वो ऐड हो रहा है ना सर एक 117 है और एक 177 है। अच्छा सर आपने 117 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 अच्छा, लेकिन मैं हैरान हूँ ये इसमें 117 आया कहाँ से, इसमें तो नीचे 117 है ही नहीं। देखें ये ए ये वैल्यू आई एम श्योर ये टाइप सही नहीं हुआ, लेकिन इसमें 117 नहीं है। जी सर। ये पिछले स्लाइड में देखें ना कि ये कहाँ से आया है, ये असल में हमने वो वेरिएबल सारे प्लग इन कर लिए ना, तो यस सर। ये तो फिर कहीं गलती की है हमने। हाँ जी, ये देखें टी ये अपने साथ ला रहे A2 और A3, ठीक है, वो दूसरा अपने साथ ला रहे D5, तो ये मल्टीप्लाई होके भी या इधर A2 नजर आने चाहिए, A3 नजर आने चाहिए, D5, तो D5 की वैल्यू तो अच्छा ये 129 भी तो उसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि लेट्स ट्रस्ट दीज वैल्यूज, ओके ठीक है, हम इसको ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी कैलकुलेशन 117.8 प्लस 177.8 प्लस 96.5 that gives me 392.1। थोड़ा सा रफली इसको अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं ना, आम को देखें किधर पड़ा हुआ है, इसका ये इसका ओरिजिन है ना, तो ये x ग्लोबल x में ये A2 प्लस A3 प्लस D5, हाँ जी, तो A2 is 177.8 plus A3 is 177.8 plus D5 is 129.7 129.5। हाँ ये मुझे पता था, ये 485.1 आना चाहिए, तो कहीं गड़बड़ की है। मैं ये कैलकुलेशन मैटलैब में कर लूँगा ना, I'll verify, मुझे इस 117 पे शक। Alright, हाँ जी 117 चले, लेट्स मूव ऑन ना। अच्छा ये जो इसको भी करते हैं, लेकिन लेट्स डू दिस वन, S1 साइन ऑफ थीटा 1 इज 0, तो जैसे ये आगे 0, अच्छा नहीं इधर भी देख लें ना, साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 इज 1, साइन ऑफ थीटा 5 इज 0, ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट सारा 0 हो गया। इधर साइन ऑफ थीटा 1 इज 0, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। इधर कॉस ऑफ थीटा 1 इज 1, cos of theta 5 is 1, तो इधर आएगा -1। इस वाले पे देखें sin of theta 1 is 0, तो ये तो 0 आएगा, ठीक है। ये तीसरा रो कर लेते हैं, cos of theta 5 is 1, sin of theta 2 plus theta 3 plus theta 4 is -1, ये आएगा +1, ये आएगा +1, यस यस। ये आएगा माइनस साइन ऑफ थीटा 5 इज 0, तो ये तो 0 ही आएगा, ठीक है। और ये cos ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा, ये 0 आएगा, ये तो 0 इसलिए भी आएगा कि किसी रो में एक ही 1 हो सकता है, इसने यूनिट वेक्टर भी रहना है, रिमेंबर, ठीक है। तो
अब देखते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। इसके मुताबिक x5 जो है इट्स पॉइंटिंग अलोंग z naught. X point is pointing along z naught. X5 is pointing along z naught. Perfect. फिर y5 is pointing along negative y naught. Y5 is pointing along negative y naught. Yes, y5 is out of the page, y naught is into the page. Good. Or z5 is pointing along x5. z5 is pointing along, sorry, x naught, x, yeah. तो ओरिएंटेशन पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक है, इधर कुछ गड़बड़ हो रही है, I'll check that. ठीक है, अच्छा ये भी कर लेते हैं. साइन ऑफ थीटा 1 इज साइन ऑफ 0 इज 0, तो ये तो आएगा ही 0, क्योंकि y के अलोंग तो कोई डिस्टेंस हमने नहीं ट्रेवल की. और इधर क्या प्लग इन करें, साइन ऑफ थीटा 2 इज 0, तो ये पार्ट निकल गया. साइन ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज 0, ये भी निकल गया. कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज 0, ये भी निकल गया. इधर रह गया 215.9 ओनली along z. तो इसको, अच्छा अभी हमने सिवाय इस वैल्यू को हमने वेरीफाई करना है, तो इसको मैं रेड छोड़ देता हूँ. बाकी हमने जो है वो सारे वेरीफाई कर लिए except this guy which is some mistake in calculations. अब इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या the origin of frame 5 is translated वाकई to 15.9 units along z naught. तो yes, d1 is 215 mm. 215, ये 0.9 कहीं टाइपो में आ गया कैलकुलेशन में, कोई मसला नहीं, 0.9 का एरर है. ठीक है, तो अभी समराइज करते हैं कि भाई अब मैं आपको जो असाइनमेंट में आपने करना है वो है, इफ यू गो टू योर जो आपको मैंने विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर दिया था, व्हाट वाज इट, वेयर वाज इट, लेक्चर्स, नो, लैब, या robot visualization software. If you go in here and let's say load Puma robot, and now you find these matrices, or not even just matrices, you're finding T5 with respect to 0. तो इसको अब मैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स खोलें, ये यहाँ से आप थीटा चेंज करेंगे और इनवर्स काइनेमेटिक्स. आज अब ये जो Q है ना, ये आपकी ओरिएंटेशन, आपका रोटेशन मैट्रिक्स है. विच रोटेशन मैट्रिक्स, जो आखिरी मैट्रिक्स में आता है. इस केस में तो आपने T5 0 पॉइंट किया ना, वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आपके पास T6 0 होगा. मतलब आपने इस तरह के 6 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए होंगे इस तरह के. लेकिन बहरहाल फिर भी आखिर में ये वाला पार्ट जो है ना, ये आएगा रोटेशन मैट्रिक्स, एंड दैट रोटेशन मैट्रिक्स इज दिस. तो अब आप क्या करेंगे, इस रोबोट के DH पैरामीटर उठा लेंगे, ये है. इस DH पैरामीटर से 6 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल लेंगे, 6 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. उन 6 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालेंगे, which will give you the tool frame with respect to the base frame. और यहाँ से कुछ थीटा चेंज करके वेरीफाई करेंगे कि आपका ओरिएंटेशन यही आता है और पोजीशन ये आता है. इसका मतलब है कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है T60 वो ये है, उसके 3 एलिमेंट्स ये हैं. कि मैं असाइनमेंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ. ठीक है, असाइनमेंट 4, ठीक है, लोड
the robot Puma 560 in robot visualization software. So it should look something like this. And then half an hour. Why are you asking? So you open this, see the DH parameters, which is, if you go here, these are your DH parameters. और इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रहे कि मैंने आपको कहा था कि ये इन्होंने चीज़ों को रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जिस चीज़ को बी कह रहे हैं ना, वो असल में आपका डी हम उसको कह रहे हैं। ये उसको डी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, कोई मसला नहीं, दैट्स नॉट अ बिग डील। जरा जूम बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रहे। अब आपने क्या करना है, फाइंड दी find t6 with respect to 0 as a function of theta 1 to theta 6, ठीक है। बाकी बेशक सारे न्यूमेरिकल रिप्लेस कर दें, बट फाइंड इट एंड इट विल कम आउट इन दिस फॉर्म। थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप मैटलैब का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, मैटलैब में मैं आपको लैब में फिर एक ट्रिक बता दूंगा कि भाई इतने बड़े मैट्रिक्स मैटलैब में सिंबॉलिकली कैसे कंप्यूट करते हैं। सिंबॉलिकली मीन जिसमें थीटा एज अ फंक्शन ए वेरिएबल आए ना, और फॉर एनी configuration, sample configuration, फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। ये लेट्स से कॉन्फ़िगरेशन मीन थीटा की एक खास सेट ऑफ थीटा, for any configuration, for example this, ठीक है। verify that ठीक है, verify that your T6 matches that in software। सॉफ्टवेयर में हमें T6 कहाँ से मिलेगा, इन दो चीज़ों को साइड पे रख लें और इसके साथ नीचे, बल्कि मैं पूरे का पूरा आपको दे देता हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई ये कहाँ से है। तो ये उसके वो कितने एलिमेंट्स आपको मिल गए, बाकी तो नीचे सिर्फ 0 लगाना है ना, 0 0 1 0 0 0 1, इधर नीचे 0 होगा, सिर्फ वो आपने उसने आपके लिए 0 नहीं लगाया, इधर भी 0 वो मैं लगा देता हूँ और इधर भी 1। So this is your, it looks pretty weird, but this is your T6 matrix.
ये उसका ओरिएंटेशन पार्ट है. This is the orientation part. ये क्या है? ये है rotation of frame 6 with respect to 0. और ये जो इसका पार्ट है राइट वाला, ये उसका है जी position of the origin of frame 6 with respect to the base. So together these two give me T6 relative to frame 0 as a function of q. q को मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि q is now 6 thetas, no? q vector है, remember ये, ठीक है? It is actually coming as, this is your 2 by 2. ऐसे करें? Yes. So this is 0, 0, 0. This is 1, and this is P6 and 0, and this is R6 and 0. This is also a function of all the thetas, and this is of course as a function of all the thetas as well. So this one, this. ये आप इधर इस सूरत में फाइंड कर लेंगे और नीचे आप इसको न्यूमेरिकली फाइंड कर, ठीक है? So let's see how far it goes, but MATLAB में I have to tell you how to do symbolic computation ताकि सब कुछ आपको कागज पे ना करना पड़े. तो ये this is still forward kinematics. लेकिन remember exam point of view से इनको ये lengthy calculations important नहीं है. तो इन कैलकुलेशन को इंटरप्रेट करना, जैसे इसको मैंने इंटरप्रेट किया कि इसमें ये मुझे क्या कह रहा है. अगर मुझे रोबोट दें तो क्या मैं डायरेक्टली वो निकाल सकता हूँ, या वो मुझे दें और मैं आपको कहूँ रोबोट को इस पोज में रख दें, रोबोट को इस पोज में रख, कोई भी रैंडम पोज किसी ने ले लिया और मुझे कहे कि रोबोट को इस पोज में रख दें, तो सिर्फ मैं अगर ये आखिरी और पहला फ्रेम भी रख दूँ ना तो दैट्स गुड इनफ, ठीक है? तो दिस इज इट फॉर टिल नाउ. अच्छा, ये स्टैनफोर्ड एक और मैनिपुलेटर है, इसमें लीनियर जॉइंट है. तो लीनियर जॉइंट में अगर आप देखें, लीनियर जॉइंट, प्रिज्मेटिक जॉइंट या लीनियर जॉइंट इज योर जॉइंट नंबर 3. सो यहाँ पे जॉइंट वेरिएबल θ1 है, यहाँ पे θ2 है, लेकिन यहाँ पे D3 है, θ3 नहीं है, D3, क्योंकि ये लीनियरली मूव कर रहा है along Z2. फिर θ4, θ5, θ6, बाकी तो ठीक है. तो अगर हम अब DH पैरामीटर्स लिखेंगे, DH टेबल, तो θ1 को मैं इसलिए हाईलाइट करूं कि जॉइंट वेरिएबल है, θ2 यहाँ जॉइंट वेरिएबल है, इट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू, D3 यहाँ जॉइंट वेरिएबल है और θ3 0 है. θ3 इसलिए 0 है कि x2 और x3 जो है वो लीनियर है, एक दूसरे के लॉन्ग पॉइंट पर. x2 और x3 इधर नजर नहीं आ रहा, बट दिस इज आई थिंक x3. अच्छा, पहले तो इसको पूरे फ्रेम्स असाइन करने हैं ना, कुछ फ्रेम्स कम है. Z3 ये है तो ये x3 होगा, या so x3 and x2 are pointing along the same direction, so that's why θ3 in this particular configuration is 0. θ4 is variable, θ5 is variable, θ6 is variable. अब इससे अगर हम वो matrices निकालेंगे 6, तो they will look like this. This is T1 and 0, T2 and 0, T2 and 1, T3 and 2. And it's very interesting. Why? Because there is no change in orientation always. There's no theta.
So the orientation of these two frames always remain the same because there is a linear motion here. Linear motion does not change, does not affect the orientation. And that there is a distance along Z2. D3 is along Z2. Remember, every DI is along the previous Z. और बाकी उसी तरह आए हुए हैं, ठीक है। और ये वो हमारा आखिरी मैट्रिक्स है। जब 6 के 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो R11 की एक लंबी सी वैल्यू निकलती है। It looks like this. So you may not be asked to multiply these 6 matrices and find this long entry, but you may be asked to put in some values, plug in some values here and tell me where the arm is in the space. What is its orientation for this particular set of theta and what is its position? ठीक है। So ये आपको given होंगे। कुछ आपको frames खुद assign करने हैं। तो ये मतलब अगर इसी आर्म को मुझे कोई कहे, अच्छा पहले तो इसको frames नहीं assign किए, तो if you assign frames quickly that will be a good practice. आखिरी frame assign किया हुआ है। A हमारा होता है Z5 पे कितने joints हैं? 6 joints हैं, तो ये Z6 होगा। ये sliding होता है Y के along, तो ये Y6 होगा और ये X6 होगा। But where is our theta? पहले तो frame जल्दी जल्दी assign कर लेना। तो if I could assign frame, I will put my X there. I'll put my Y there into the page. ये तो base frame तो generally इसी तरह होता है। और I put my Z0 upward. ये एक frame assign हो गया। इसको मैं लिख भी सकता हूँ। This is my X0. ठीक है। And that is my Y0. And that upward is my Z0. और वो Z0 इसलिए भी है कि theta1 is always about Z0 upward positive. अब इसको frame assign करना। तो origin तो आप कहीं भी रख सकते हैं along Z0, ठीक है। तो इसको ये मेरा Z2 हो गया, Z1 हो गया। और बेशक Y0 कोई कैद तो नहीं है ना, तो Y0 को भी मैं इसी तरह रख लूं, assuming theta1 is 0। अगर 0 नहीं होगा तो ये फिर रोटेट हो जाएंगे। तो इस configuration में this is also good enough. I'm not destroying, sorry, I'm not disturbing the DH parameter. Why? The DH parameter says that DH parameter says कि X orthogonal होने चाहिए। Where were the DH parameter? Let's find out. दो conventions हैं DH convention, जिसका ख्याल रखना है, ठीक है। The DH convention says, where are they? Yeah, represent, no, this is, अच्छा ये 4 पैरामीटर्स होंगे। चलें अगर हम वर्ड्स में उसको ना भी बयान करें तो ये है जी कि आपका y के along distance now, y के along wait, ठीक है। तो we are not moving along y। आपका जनाब दोनों रोटेशन या ट्रांसलेशन along z हो तो यस, ठीक है। और अल्फा इज द ट्विस्ट, सो इस केस में तो ट्विस्ट इसलिए नहीं है कि z पैरेलल हैं। और आखिरी रह गया d, तो d1 हमारा एग्जिस्ट करता है बिकॉज d1 इज along z1। तो d1 कहाँ से कहाँ तक है? d1 यहाँ से, ये मेरा d1 हो गया ओरिजिन तक। तो ये पहले फ्रेम असाइन कर लें फिर डीज निकालना बाद की बात। तो दिस इज माय d1।
so for all the parameters I can easily locate, so my DH parameter, my DH convention has not been violated. ठीक है, अब इसको फ्रेम असाइन करना है, तो इसमें तो चॉइस बहुत आसान है, निज़ाम खत्म हो जाए, मैं इस दौरान फ्रेम असाइन करता हूँ। हाँ जी, can anyone tell me if I put frame 2, right? Hello. सर जी ये सर। Z और Y को रिप्लेस कर दें तो Z और Y को देखिए, Z तो मेरा यही रहेगा, क्योंकि D3 विल बी अलोंग Z2 और ये लीनियर मोशन इसी तरह कर रहा है। देखें, ये इसका लीनियर पार्ट है जो एक्सटेंड आउट एन होगा। ठीक है, तो Z2 तो ठीक है, लेकिन क्या X2 ठीक है? आप देखें ना, आप अल्फा फाइंड कर सकेंगे। Alpha is a twist. Whenever Z's are not parallel, we have a twist. So Z's are not parallel, yes. So alpha is about, अच्छा, alpha is about x1 or x2? Anyone? Alpha is about alpha I is about xi or xi minus 1? Hello? जी सर। Alpha is about yeah, around xi or xi minus 1? सर XI सर वो लिखा हुआ है यार, xi, ये देखें। अच्छा, तो मैं इस वक्त अल्फा 3 इधर फाइंड करूंगा, क्योंकि ट्विस्ट तो आया है ना। ये यार Z1 है, हाँ, Z1 से Z2 तक ट्विस्ट तो आया है, उनके बीच में एंगल तो है। वो एंगल x2 के अराउंड मेजर करूंगा, तो क्या x2 के अराउंड अगर आप अपना थंब पॉइंट करें, तो कैन यू गो फ्रॉम Z1 टू Z2? नो सर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है आपका x2 जो है वो
कम अज कम ये नहीं हो सकता, otherwise we will destroy the DH convention. Let's make it out of the page. Y का बाद में डिसाइड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है. अब जनाब your x2 is out of the page. Now tell me, can I find this is x2. अब अपना thumb x2 के along point करें and go from z1 to z2. Can you go? Yes, sir. Is it clockwise you are going or counterclockwise? So it's clockwise. It's negative, so it's right. देखें वो negative pi by 2 है. Negative pi by 2 है आपका alpha 2. Alpha 2 आपका negative pi by 2 है. I can clearly see. तो अगरचे फ्रेम गिवन नहीं थी, DH टेबल गिवन है, लेकिन ठीक है मैं उससे भी फ्रेम असाइन कर सकता हूँ. अब y2 का बताएं. Where is y2 pointing? As for the right hand rule, where should be my y2? Right hand rule? Sir, वो नीचे होना चाहिए. नीचे होना. Very good. So that is what your y2 is. तो इसको हमने पहले x2 कहा था, लेकिन then we found out that DH parameters convention is destroyed. तो y2 is pointing down. ठीक है. तो अब अगर मैं क्विकली देखना चाहूँ कि भाई मैंने अभी तक DH टेबल जो मुझे गिवन है उसको वायलेट तो नहीं कर रहा, तो मैं कोई भी वायलेट नहीं कर रहा. मेरा D1 भी नॉन पॉजिटिव है, सॉरी नॉन पॉजिटिव नॉन जीरो है. A1 मेरा जीरो है, देयर इज नो डिस्टेंस अलोंग x0. यस. A2 भी मेरा जीरो है, देयर इज नो डिस्टेंस अलोंग x1. यस. ठीक है. A3 भी मेरा जीरो है बिकॉज देयर इज नो डिस्टेंस अलोंग x2. D3 मेरा non-zero because there is some distance along Z2. So I'm going right. I've assigned 3 frames. And those first 3 are the more crucial one because they determine the position of the end effector. ये बाकी तो सिर्फ orientation में इनका बड़ा रोल होता है और ये बड़े repeat होते हैं. ये तीनों आप हर जगह देखेंगे इसी तरह पड़े होंगे रोल. और ये मतलब this will be your Z3, Z4, Z5. हमने जो आम किया वो भी इसी तरह था. हमारा z इधर पॉइंट कर रहा था और दूसरा z ऊपर था, उसमें तो 6 जॉइंट था नहीं, वरना वो इस तरह होता. तो what I mean to say is I can do the rest very quickly. This is my z3 and theta 3 is very obvious. This is my z4 और ओरिजिन भी बड़ा आसान है जी. जहाँ Z3 आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, that's where your origin is. And this is my Z4 जो थीटा 5 को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है रोटेशन के लिए. And this is my Z6 Z5 ओरिजिन बिल्कुल सिलेंडर के सेंटर में कर दें, दैट्स प्रेफर्ड. ठीक है. और उसको लेबल कर दें जी Z5 और Z6. तो मैं आपको कह चुका हूँ कि भाई it is always assigned like this to the end effector right in the middle of the fingers. आप कह सकते हैं हवा में पड़ा होता है फ्रेम. And that is my Z6. तो जब Z's assign हो जाए तो लाइव आसान हो जाती है क्योंकि that's the first thing to do. Second thing to do is decide your X. तो अब अगर इधर मैं X assign करना चाहूँ तो do you see any twist between these two joints? No, sir. No. तो इसका मतलब है X को X के पैरेलल रख दें, बिल्कुल ओरिजिन अपना डिसाइड कर लें कि भी मेरा इधर है. क्योंकि जब एक बार ओरिजिन डिसाइड कर लें then you find distances out. और ये मेरा x3 हो.
अब बताएं x3 हो गए तो y3 निकालना बड़ा आसान है, लेकिन अब x4 निकालें जी। डू यू ट्विस्ट बिटवीन जॉइंट 4 and joint 5? Yes, sir. Twist. Yeah, Z3 is not parallel Yes, to sir. Z4, so I see twist. लेकिन अब इस twist के लिए x4 assign करना जरूरी है, क्योंकि this twist is about the new x. तो ये twist हमें x find करने में help दे देगा, और वहां से भी हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई this twist is +90. तो +90 के लिए मुझे काउंटर क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो I will just go, I will assign my, I think this is the best choice to put my x4 like this. अब अगर x4 और x3 parallel है, so it doesn't matter because I point my finger along x4 and I move from z3 to z4. I curl my rest of the fingers from z3 to z4 counterclockwise, so they give me +90. So my x4 is right as well. Or x5, how about x5? Anyone? अच्छा फिर ट्विस्ट फिर है। अच्छा सॉरी, ये तो -90 है यार, ये मेरा x4 जो है ना, इट शुड बी इनटू द पेज। उसकी वजह ये कि I go from z3 to z4 counterclockwise, clockwise, z3 to z4, नहीं, it should be here. ये नेगेटिव पाई आना है ना, तो नेगेटिव की वजह से, सॉरी, नेगेटिव की वजह से I point my finger along this x4 सर ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है Z3? z3। देखें, I'm talking about this one. ये नेगेटिव इन्होंने डाला ना। Let's put our frame so that our final DH parameter and their DH parameter they assign, they align, they are similar. तो ये -π/2 हमारा इधर आ रहा है, तो -π/2 के लिए I point my finger along x4 and z3 से मैंने जाना है z4 पे, तो काउंटर क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, तो क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्लॉकवाइज जाऊंगा। एक मिनट, अच्छा इसको सामने से देखना है जी। यस, ये इनसाइड होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ हाउ। ये दोनों ठीक है, लेकिन फिर हमारे और उनके अल्फा में माइनस का फर्क आता। मैं चाहता हूँ कि ये DH टेबल ही मेरा आए। DH table is not unique. Someone could have point x the other way and then they would put a plus here, so that would also be right. कोई मसला ही नहीं था, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि DH पैरामीटर मेरे यही आए, ठीक है। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। Let me show you. So this is x को मैंने पेज के अंदर किया, this is my x, and I'll have to go from z3 to z4 clockwise. So that is, देखें सामने से देखें, ये मेरा x है, clockwise में जाऊं from z3 to z4. So that's why x का into the page रखना जरूरी है। लेकिन अगर आप x को out of the page रखते हैं and then you go from z3 to z4, z3 to z, फिर भी clockwise आता है। yes, अगर x out of the page है, नहीं सॉरी, z3 तो उधर है ना, फिर तो x4 मेरी तरफ है, z3 उधर है, तो फिर मैं z4 की तरफ जाऊंगा तो काउंटर क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो फिर मेरा और उनके अल्फा में माइनस का फर्क आएगा, which I don't want. So that's why I put my x4 into the screen. I hope this is clear. अगर नहीं है तो उधर माइनस हटा दें और x4 को बाहर की तरफ कर दें. Still I will accept the answer.
तो आखिर में ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अभी कहेंगे मैं जिससे पूछूंगा वो कहेगा x4 हो गया, x5 किधर होगा जी? अच्छा पहले तो इज देयर ट्विस्ट बिटवीन द जॉइंट 5 एंड जॉइंट 6? यस सर 90 डिग्री या Yes, sir. 90 डिग्री, वो Yes, प्लस sir. 90 है। तो अब मैंने x को एक ही डायरेक्शन में रखना है ताकि वो प्लस मेरा उन्हीं के साथ मैच करे। तो टेल मी वेयर शुड द x5 बी? फर्स्ट थिंग इट विल बी परपेंडिकुलर टू z5 ऑलवेज, या तो परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब है कि या तो इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा। अब आप उसको इस तरह डिसाइड कर लें कि वो आपको ट्विस्ट दे दे अल्फा फ्रॉम z4 टू z5 और पॉजिटिव 90। तो टेल मी वेयर शुड माय x5 बी ऑन द स्क्रीन? मैं किससे पूछूं? लेट्स आस्क सिद्रा जी। Sir, out of the page. क्वेश्चन ये है कि x5 प्लेस कर दें जी, वेयर शुड आई प्लेस माय x5 ऑन जॉइंट 5? You Yes, have sir. you have four options: Ye- upward, yes. downward, into the screen, out of the screen. Mm. Sir, downward. Let's put it downward. Let's see what happens. Sidra says that this is downward. This is my x5. So let's verify whether it is correct or not. तो उसके लिए अगर ये मुझे पॉजिटिव अल्फा देता है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो पॉजिटिव अल्फा के लिए मैं क्या करूँगा? I have to point my thumb along x4 and I have to go from z4 to z5. तो z4 से z5 में इसलिए नहीं जा सकता कि z5 is not into the screen, z5 is upward। तो देखें, इसको भूल जाएं, अपने फिंगर्स को z4 से z5 की तरफ ले आए, ये आपको x बता देगा। z5 अच्छा उधर प्लस 98 तो काउंटर क्लॉकवाइज z5 से z4 से z5 की तरफ चले जाएं, z4 से z5 की तरफ चले जाएं। Where is this pointing to? Into the page. सर into the frame होगा। Into the screen. Very good. So that's what you have to. तो इसका मतलब है कि x4 और x5 पैरेलल थे, तो यस। असल में एक बात आपको एक और कह दूं कि देखें, z3 से आप z4 गए तो आपने एक ट्विस्ट लिया, और जब z4 से z5 जा रहे थे तो उस ट्विस्ट का अपोजिट लिया, तो उधर -90 है, इधर +90 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई आपने वो जो x3 और x5 है वो एंटी पैरेलल होंगे। x3 और x5 एंटी पैरेलल, क्योंकि आपने क्या किया, नहीं x3 और x4 सॉरी एंटी पैरेलल होंगे। और उसके बाद आप जनाब ये -90 आपको z3 से z4 पे लेगा, उसका अपोजिट ट्विस्ट आपको +90 जो है वो z4 से z5 पे ले आया, z4 से z5 पे ले आया। ठीक है, तो सर ये x5 क्लॉकवाइज नहीं आएगा जी4 से जी5? मैं देखता हूँ, पॉजिटिव है ना तो काउंटर क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। तो सामने से उसको देखेंगे ना, सर अपने असल में इनटू द पेज है ना, x4 जो है सर वो इनटू द पेज है ना। हाँ जी, तो सर अगर हम रोटेट करें फिंगर को जी4 से जी5 की तरफ तो हाँ वो जी, क्लॉकवाइज नहीं आएगा? वो डिपेंड करता है आप अपने फिंगर को देखते सामने से हैं कि पीछे से हैं। ये इनटू द पेज है,
Z4 ऊपर है, Yes, sir. वो उधर गया कि नहीं गया? यस सर. अब इसको सामने से देखने, सामने से यस सर. काउंटर क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? सर सामने से तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है सर. यस, सो दैट इज व्हाट इज पॉजिटिव 90. ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रहे. और y नहीं असाइन हुए तो y तो बहुत ज्यादा आसान है. राइट हैंड रूल के मुताबिक, राइट हैंड रूल ये है कि दिस इज माय z3 is pointing to the right, x is pointing to the out of the page, z3 is pointing to the right, x is pointing out of the page, so y is pointing downward. So y मेरा ये मेरा y है. ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने में फिर हमारे पास y का होना ज़रूरी है, ताकि हम जल्दी जल्दी से by visually we can also say that where is x3 pointing, where is y3 pointing, where is z3 pointing. तो ये हमारे पास y3 आ गया. y4 मैं आप पे छोड़ देता हूँ. z is upward, x is into the page, y is to the right. तो positive y is there, which is anti-parallel to z3. थोड़ा सा इसको ऐसे रखना है कि ये उसके साथ इंटरफेयर ना करे. इसको थोड़ा ऊपर कर दें. खैर इसको भी थोड़ा सा. Yeah, so now this is my y4. y5 भी जल्दी से कर लें. y5 is, your z5 is there, x5 is into the page, y5 is upward, so it's this is your positive y5. y5 is, it's pointing up. So this is a crucial part. That's why I spent too much time on assigning the frames, because you know the rest of the things are being derived from the way your frames have been placed. अगरचे आमतौर आपके लिए डेटा शीट में ये मैन्युफैक्चर ही करता है, जब तक आप अपना आम खुद ही नहीं डिज़ाइन करते या उसके फ्रेम्स वगैरह खुद ही नहीं चेंज करते. Which, so this is now your frames and your DH table, they do agree with each other. सर जी सर ये फ्रेम 2 और फ्रेम 1 से फ्रेम 2 किस तरह है, ये इसकी समझ कुछ नहीं आ रही. फ्रेम 1 से फ्रेम 2. फ्रेम 2 सर ये ठीक नहीं लग रहा. तो फ्रेम 1 से फ्रेम 2 देखें. फ्रेम 0 से तो फ्रेम 1 बहुत इजीली आए ना, क्योंकि Z1 हमारा उधर ट्विस्ट है ही नहीं. तो जब ट्विस्ट नहीं होता तो नॉर्मली ये x और y एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन होते हैं. ठीक है, अब जब इससे ऊपर जाना है तो Z2 पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना कि Z2 पॉइंटिंग टू द राइट, यस क्योंकि D3 ने Z2 के लॉन्ग sir. मूव करना. अब हमारे पास नेक्स्ट चॉइस है कि x2 को कहाँ रख दें. तो अगर आप इधर देखें तो इस अल्फा ने तो इन दो फ्रेम्स के बीच में ट्विस्ट बता दिया. अब ये वाला अल्फा जो है ये हमें इन दो फ्रेम्स के बीच में ट्विस्ट देगा -90, और वो मुझे नजर आ रहा है कि -90 है, क्योंकि Z1 ऊपर है और Z2 उधर है, तो ट्विस्ट तो है और 90 का है. अब क्वेश्चन ये है कि ये +90 है कि -90 है, तो वो उधर हमने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम इसको -90 ही रखेंगे. तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने x2 को प्लेस करेंगे, वरना नॉर्मली x2 को प्लेस करते हैं फिर अल्फा निकालते हैं, जिस तरह पिछले क्लास में हमने एग्जांपल किया था. इधर हम अपोजिट कर रहे हैं. हमें DH पैरामीटर्स फ्रोजन है, फ्रेम्स हमारे इख्तियार में. तो अब आप x2 को किधर रखेंगे? अब x2 को माइनस ट्विस्ट को आपने माइनस क्लॉकवाइज रखना है. फ्रॉम ट्विस्ट को, वो मेरा कैमरा ही गायब. रोटेशन हुई है ना, Z2 रोटेट कर गया है. तो Z1 नीचे है, Z2 उधर है. तो आई विल पुट माई x सच दैट
when I go from Z1 to Z2, अच्छा ये तो पॉजिटिव आ रहा है मेरा, उधर नेगेटिव। या तीनों एक्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। तीनों क्या? सब कोई भी दो एक्सिस में पैरेलल नहीं है के एक्सिस के रोटेशन भी। नहीं, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मैं फिलहाल इसको ठीक कर दूं कि क्लॉकवाइज जाने के लिए मैंने सर अपनी आप चैट में टाइप कर दें, आपकी आवाज कट रही है। आई एम नॉट श्योर कि हर एक को सुनाई नहीं दे रही कि मुझे नहीं सुनाई दे रही, बट इफ यू कैन टाइप, if you नहीं आ can रही है सर उसकी आवाज कट रही। if you can type in the chat, I'll be better in a better position to answer. और मैं इस दौरान एक आपके क्वेश्चन से ये फायदा हो गया कि हमने x2 को उधर रखा था, x2 को इनटू द स्क्रीन होना चाहिए ताकि मेरा z नीचे और z उधर है, ताकि मैं क्लॉकवाइज मोशन करूं कि -90 आए। और जब एक z2 उधर है, ये इधर है, z2 is to the right, x2 is it, तो फिर मेरा y भी अब ऊपर आएगा, नीचे नहीं आ सकता। यस, अब जनाब आप अपना क्वेश्चन पूछें। वी हैव करेक्टेड द फ्रेम हियर। लेट्स सी, नो क्वेश्चन येट। तो आई थिंक इट वाज, कौन था ये? इफ यू कैन चैट इट, इट्स हसन गुड। अली था सर। हाँ जी हसन, अदरवाइज क्लासरूम में पेस्ट कर दें कि भाई व्हाट इज द कंफ्यूजन। अभी तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने एक्स को पहले सही नहीं रखा था। सही था अगर हमें डीएच टेबल यही नहीं रखना था। अगर डीएच टेबल इसी को रखेंगे तो फिर इसके मुताबिक सिर्फ ये वाले फ्रेम्स ठीक है। सर बाकी फ्रेम चेंज नहीं होंगे सर, जो फ्रेम 2 हमने चेंज किया था? नहीं, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि Z2 टू Z3 से Z2 से Z3 तक तो ट्विस्ट नहीं है ना। तो जब ट्विस्ट नहीं है, हाँ, और ए भी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस अलोंग x2 के अलोंग तो हम डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो अंदर होता है या बाहर होता, इट डजंट, वी डोंट केयर। ठीक है, यही तो ब्यूटी है एसडीएच कन्वेंशन की कि भाई वी आर फोकसिंग ओनली ऑन सर ये x2 और x3 ये पैरेलल आपस में नहीं आएंगे, ये एंटी पैरेलल है सर? ये एंटी पैरेलल है या? गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो रोटेशन मैट्रिक्स, इट शुडंट डिस्टर्ब, प्रिज्मेटिक जॉइंट शुडंट डिस्टर्ब द ओरिएंटेशन। तो इन दोनों की ओरिएंटेशन सेम आएगी, क्योंकि वो लीनियर जॉइंट है। लीनियर जॉइंट डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द चेंज इन ओरिएंटेशन। तो जो x2 y2 z2 थे, सर अभी जो है ना एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है Z4। अभी z4 क्या? अभी सर अगर हम Z3 से Z4 की तरफ जाएंगे तो सर अभी हमारे पास करेक्ट आ रहे हैं, एंटी पैरेलल आ रहे हैं सर। नहीं, वो तो ठीक है, वो उसके, हाँ जी, वो हमने उसको गुड x3 से हम, अच्छा अभी तो इसका मतलब है कि हमारा जब क्वेस्ट आया है तो x4 तो ठीक है हमारा, क्योंकि x4 ने तो हमें -90 देना है ना। तो x4 इज इनटू द पेज, z3 से हम z4 पे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब है x3 और x4, वो जो ट्विस्ट इधर हुआ था उसको अंडू किया गया। इधर -90 था, उधर +90 था, इसलिए तो x3 और x5 हमारे पैरेलल हैं। तो नाउ आई थिंक इट्स गुड, इट्स परफेक्ट। अभी इसमें कुछ मसला नहीं है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आर्म, क्यों? जितने भी किसी डीएच टेबल में एंट्री 0 होती हैं, स्पेशली ए, डी और अल्फा वाले कॉलम्स में, उतने ही उस आर्म की जियोमेट्री सिंपल होती है। आई रिपीट,
जितने एलिमेंट्स जीरो हैं उतना आपका आर्म बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स नहीं है। और सिंपल इसलिए देखे ना, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, वो आगे पीछे मूव कर रहा है। इस किस्म के रोबोट इंडस्ट्री में जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करते हैं। लेट्स सी, ये असाइनमेंट में मैं दे देता तो अच्छा था, लेकिन सिलेंड्रिकल रोबोट एबीबी या फनूक, मैं खुद से कह रहा हूँ एबीबी का है भी कि नहीं, ये है, ये ऊपर ये वो रेवोल्यूट जॉइंट है। तो इसमें लीनियर निधन नहीं है, नहीं। आई एम लुकिंग फॉर 2 लीनियर जॉइंट और एक रेवोल्यूट जॉइंट। देखें, ये एबीबी हटा देना, तो अगर इफ यू लुक एट द एनिमेशन समवेयर, तो इट लुक्स लाइक दिस। पहला रेवोल्यूट है और 2 नेक्स्ट जो है वो प्रिज्मेटिक है, लीनियर है। तो इट्स अ वेरी सिंपल आर्म। ये देखें, ये ऊपर नीचे जो मोशन है ना, ये है, ये जॉइंट, एंड इट गोज क्वाइट अप, आई मीन 1 मीटर से ऊपर तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द आर्म ना। और वो जो दूसरा लीनियर है वो ये है, ये देखें इसको, ये सेकंड जॉइंट, ये फर्स्ट जॉइंट है। ये फर्स्ट जॉइंट आपको ये मोशन दे रहा है, ये वाला। तो फर्स्ट जॉइंट यू कैन सी नाउ इन एक्शन। इससे पहले आपने सेकंड जॉइंट को इन एक्शन। अच्छा, ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि इसको आप फर्स्ट कहें, इसको सेकंड में, हो सकता है वो आपका फर्स्ट हो, ये सेकंड में। ठीक है, सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट सीक्वेंसिंग। और ये वो थर्ड जॉइंट है, लीनियर मोशन। और ये आखिर में तो इन्होंने ग्रिपर लगाया है, तो दे डोंट हैव दीज नेक्स्ट 3 रेवोल्यूट जॉइंट्स। ये रिस्ट नहीं लगाया। रिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि रोबोट में, रिस्ट जो है ना, 3 कोसेंट्रिक जॉइंट्स बिल्कुल इंसानी हाथ की तरह होते हैं। Wrist attached to industrial robot। अगर एक्चुअल तस्वीर मुझे कहीं नजर आए तो ये रिस्ट है, देखें इधर ये 3 जॉइंट्स आए होते हैं। ये आपको टूल पिच और या आइलर एंगल मोशन देते हैं। ये इस तरह की चीज होती है, देखिए 3 जॉइंट्स इधर होते हैं। तो उसमें तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी सच थिंग इंस्टॉल्ड। तो आगे वाली 3 जॉइंट्स है ही नहीं, तो इधर सिर्फ ग्रिपर लगा दिया। तो इट जस्ट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हाँ, लेकिन ये फर्स्ट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको रोबोट के पोजीशन में बड़ा रोल इम्पोर्टेंट। ये आखिरी 3 उसके ओरिएंटेशन में रोल प्ले करते हैं, पहले 3 उसके पोजीशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज, मैं ये लिंक डाल दूँ। इट्स अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन ऑफ द सिलेंड्रिकल रोबोट। यार ये